हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बेटा आज हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेंगे। द टॉपिक दैट आई एम कवरिंग टुडे दैट इज बेसिकली मैक्रो ट्रेंड्स, occupational structure. Macro trends, occupational structure. This is the topic that I'm going to go ahead and I'm going to cover today. ये आज हम करेंगे, ठीक है? This is from Indian economy, right बेटा? We will be covering this topic together. जो भी questions होंगे, I will be posting each of this question on the I will be posting each of this question on the poll, and you will be going ahead and you will be answering the question on the poll. ठीक है? Question number 1 on your screen. Try to answer this one, beta. In India, which sector employs highest percentage of workforce? कौन सा सेक्टर का हाईएस्ट वर्कफोर्स है, वो आपको आंसर देना है. Try to answer this question, beta. Try to answer it in the poll window. Which sector has highest percentage of workforce? Okay. Primary sector, good. How about others, beta? ठीक है. Okay. So, yes, that is in fact the correct answer. प्राइमरी सेक्टर का हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी है अभी भी, इवन टुडे. इन दिस केस बेटा यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर, आपको क्या करना होगा ना, दिस इज अ होमवर्क थिंग दैट ऑल ऑफ यू विल ऑल्सो फाइंड आउट 2021, 22, 23, 24. फॉर दीज 4 years, इन 4 साल के लिए you have to go ahead and you have to find out what is the primary sector employment in percentage terms, secondary sector employment and tertiary sector employment. ये एक होमवर्क क्वेश्चन है. हर सेक्टर ने कितना कितना परसेंट एम्प्लॉय किया है, हाउ मच दे हैव एम्प्लॉयड, यू हैव टू गो अहेड एंड यू हैव टू टेल मी दैट. ठीक है? अच्छा देखो बेटा, the primary sector, which includes agriculture, forestry, fishing and other activities, has traditionally been the largest employer in India. ठीक है? प्राइमरी सेक्टर में ये सब आ जाता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड अदर एक्टिविटीज. इवन दो इट्स शेयर इन जीडीपी हैज डिक्लाइंड, शेयर इन जीडीपी हाईएस्ट नहीं है, ओनली एम्प्लॉयमेंट इज हाईएस्ट. A significant portion of Indian population is engaged in agriculture. And हमें पता है कि यहाँ पे agriculture में there is also a concept of disguised unemployment. There is a concept of disguised unemployment. तो वो भी एक, we need to go ahead and we need to remember that thing. ठीक है बेटा? Okay, let's go on to the next question. Question number 2. The process of shift in employment from primary to secondary sector and tertiary sector is known as. I am starting the poll now. So start the poll for question number 2. Urbanization, globalization, structural transformation, या liberalization. When we shift from primary to secondary to tertiary sector, जब हम एक इकोनॉमी में शिफ्ट करते हैं, ये ट्रांजिशन लेके आते हैं, सो व्हाट इज दिस कॉल्ड बेटा? इज इट कॉल्ड अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन या लिबरलाइजेशन? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, स्टूडेंट्स आर सेइंग ए और सी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग सी. ठीक है? दैट इज द करेक्ट आंसर बेटा. आंसर है सी.
The correct answer is structural transformation. It refers to gradual shift in employment and GDP contribution from primary to secondary to tertiary. This occurs in case of economic development. अच्छा, एक और इसमें there is a concept. So in India what happened ना कि हम सीधा प्राइमरी से टर्शरी सेक्टर की तरफ गए. ठीक है. We did not focus on the manufacturing sector. We did not focus on the secondary sector. Our shift was directly from primary to tertiary. Instead of shifting first to the secondary sector. और इस concept को बेटा it is called as the concept of missing middle. माने हमने जो डेवलपमेंट की हम सीधा सर्विस सेक्टर की तरफ घूमे instead of developing our primary sector first, and this is called as the concept of missing middle. ठीक है. Okay बेटा, question number 3. In India, which of the following trend is observed in occupational structure over time? Increase in agricultural employment, decrease in secondary sector employment, increase in tertiary sector employment, decrease in service sector employment. Try to answer question number 3. Poll is on your screen. Question number 3 beta. Again, whenever such questions are asked, it is my request that all of you will also remember the you will also go ahead and you will also remember what is the occupational structure exactly. सिर्फ theoretically नहीं जानना है हमें. We need to understand the occupational structure of India in terms of percentage also. ठीक है. और आपको at least 2021 से लेके 2024 तक you have to go ahead and you have to remember. ठीक है. जैसे for example, if I talk about India overall, तो आप देखोगे कि in agricultural sector employment is 40 to 45%. ठीक है. And when we talk about the secondary sector, employment is 25 to 28%. ठीक है. And when we talk about tertiary sector, employment is 30 to 35%. But for every year, हर साल के लिए आपको individually इस डेटा को रिमेंबर रखना. You have to remember this. You have to keep this in mind. सबको ये याद रखना होगा कि 2021 में तीनों सेक्टर ने क्या कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयमेंट में, जीडीपी में. 2022 में कितना था, 23 में कितना था और 24 में कितना था. That table all of you will go ahead and all of you will prepare. ठीक है. Okay, let's go on to the next question beta. Question number 4. Which sector in India has shown fastest growth in employment in the recent decades? Question number 4 beta. Which sector has shown fastest growth in employment in the recent decade? Try to answer it in the poll window. Okay. Some are saying manufacturing, some are saying construction, some are saying services. Fastest growth in employment, definitely service sector beta. अभी मैंने आपको concept समझाया, the concept of missing middle. Concept of missing middle. Missing middle का concept ही ये बोलता है that you didn't focus on the manufacturing sector, on the secondary sector. You directly moved to the service sector. And अभी मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया that service sector is growing very strong. After agriculture sector, जो sector maximum employment रखता है, that is actually the service sector, right? So it is the service sector which has grown the fastest. So service sector has expanded rapidly due to factors like digitalization, outsourcing, increased demand for financial and professional services. It has become leading contributor to GDP. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा.
It is the leading contributor to GDP. Again, इसमें if you remember, you have to also go ahead and remember the numbers. So service sector contribution to GDP of India, right? In this year, in 2024, कितना रहा? You need to go ahead and you need to also remember that. Just give me a minute. Okay, so give me a okay. So some issue, beta. So which sector has grown fastest? May, as I was telling you, you have to also go ahead and you have to also remember कि कौन से साल का बात हो रहा है and what is the number. Just go ahead and remember that also, right? So next question. Question number 5. What is the approximate contribution of primary sector to India's GDP of the recent years? 50 to 55%, 25 to 30%, 15 to 20%, 5 to 10%. Try to answer this question. Try to answer question number 5 now. All of you are right. Yes, the answer is C, beta. So, although the primary sector has the highest employment तो बहुत ज्यादा है, but उसका share GDP में काफी कम है, and it is continuously declining. And the highest contribution is the service sector, tertiary sector, which is contributing the most to the GDP of the country. ठीक है. Next question. Question number 6. We'll run the poll for question number 6 now. Which of the following best describes India's occupational structure? Predominantly agricultural, balanced across sector, highly industrialized, dominated by government jobs. किस तरीके का सेक्टर है इंडिया में? Okay. So, of course, all of you are absolutely correct, beta. The correct answer to this question is that it is predominantly agricultural sector. Definitely, that is the correct answer to this question. So, answer will be A. India's occupational structure is largely agricultural. अच्छा, इसमें one thing that you can go ahead and you can write this down. So, when we talk about agricultural sector, right? अगर सपोज मैं आपसे बोलूं कि व्हाट आर द की ट्रेंड्स, व्हाट आर द की ट्रेंड्स ऑफ 2024 इन इंडिया इन द ऑक्यूपेशनल सेक्टर, है ना? तो आप बोलोगे, वन, मैम, देयर इज डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल वर्कर्स. दिस इज अ की ट्रेंड. Secondly,
there is increase in gig and platform economy. गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी माने बच्चे, माने इनफॉर्मल जॉब्स जैसे डिलीवरी, फ्रीलांसिंग, ये सारे जो जॉब्स होता है इसमें इंक्रीज आया है. देन थर्ड, देयर इज इम्पैक्ट ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन. देयर इज इम्पैक्ट ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन, माने जो हमारा रूटीन जॉब्स था वो रिप्लेस हो रहा है. अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन जॉब्स है. हाँ, एआई में जॉब्स आ रहा है, राइट. देन फोर्थ, there are various government initiatives which you have to remember. जैसे for example, you will remember Skill India, है ना. You will remember Startup India. ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो भी हैं इन द जॉब सेक्टर, वॉट एवर वी हैव डन इन द सर्वे, इन द बजट, आपको वो भी याद रखने होंगे, राइट. एंड फिफ्थ, you have to also understand the trend of urbanization and migration. What is the trend of urbanization and migration? माने most people they are shifting towards cities. वो agricultural job से non agricultural job की तरफ जा रहे हैं. So they are shifting towards the cities, right? So this kind of question can be asked in exam. So you have to also remember what is the trend, recent trend of 2024. ठीक है बेटा. Let's move on to the next question. Which of the following is not a reason for slow industrialization in India? Lack of infrastructure, skilled labor shortage, high agricultural productivities, bureaucratic delays. Try to answer question number 7, beta. We'll run poll for question number 7 now. Very good. That is the correct answer. All of you have answered it correctly. So answer is C, high agricultural productivity. ये रीजन नॉट अ रीजन पूछ रहे हैं ना, तो नॉट अ रीजन माने अगर एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी अच्छी ही होती तो देन देयर वुड हैव बीन नो रीजन, राइट. सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कि इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर रही हैं. It is because of lack of infrastructure, because of skill shortage, right? Because of bureaucratic delays that we have slow industrialization. अच्छा, इसमें then there is a concept which is called as every year बेटा there is an index which is reproduced, उसको बोला जाता है ease of doing business. ठीक है. ease of doing business basically हमें ये बताता है कि how easy और how difficult it is to do business in a country. अब अगर हम इंडिया की 1991 से पहले की बात करें, ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी पीरियड, बिफोर 1991, it was seen that the ease of doing business was very very इंडिया का जो रैंक था वो बहुत पीछे था, राइट. इंडिया वाज रैंक्ड वेरी वेरी लो. मतलब इट वाज अ वेरी ब्यूरोक्रेटिक काइंड ऑफ प्लेस. ठीक है. हमें पता है ड्यूरिंग दैट पीरियड देयर वाज लाइसेंस राज. ठीक है. ड्यूरिंग लाइसेंस राज इफ यू हैड टू स्टार्ट एनी इंडस्ट्री, इफ यू हैड टू स्टार्ट एनी बिजनेस, अगर आपको कुछ भी शुरू करना था तो वो शुरू करने के लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता, इजंट इट. तो बेसिकली इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस. कुछ भी नया करना बहुत ही मुश्किल था, राइट. बट स्लोली हमने देखा दैट दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इट इम्प्रूव्ड. तो जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो जाता है, व्हेन इट इंप्रूव्स, व्हाट डज दैट मीन बेटा? इट मीन्स दैट नाउ यू कैन इजीली गो अहेड एंड डू बिजनेस इन दैट कंट्री. ठीक है. प्लस हमने एफडीआईज भी अलाउ कर दिए, वी अलाउड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो विथ टाइम कंपेरेटिवली इंडस्ट्रियलाइजेशन इंप्रूव्ड. बट फर्स्ट इन इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज का इस्टेब्लिश होना इंडिया में शुरू में स्पेशली बहुत ज्यादा मुश्किल था. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू इस्टेब्लिश एनी इंडस्ट्री इन इंडिया. ठीक है. ओके.
India's agricultural sector is often characterized by slow productivity due to outward practices and small land holdings. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, दैट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया ये देखा गया है कि जो हमारी लैंड होल्डिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा छोटी हैं. सो व्हाट हैज हैपेंड इज, सपोज देयर वाज अ फार्मर, ठीक है, इसका ये एक जमीन थी. नाउ दिस फार्मर हैड 4 चिल्ड्रन, ठीक है. सो द सेम लैंड इट गॉट डिवाइडेड बिटवीन 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चों में डिवाइड हो गया. नाउ ईच ऑफ देम हैज अ स्मॉल लैंड होल्डिंग, ठीक है, एंड दे कैन डू वट एवर बिजनेस दे वांट, अपना 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 कर रहे हैं. Now this land, because it is so small, when you have smaller lands, उनका जो yield होता है, उनका जो productivity per acre होता है, that falls, right? So you have very small productive, very less productivity. तो जब land holding छोटा हो जाता है, when you have small land holdings, the productivity starts declining, ठीक है. Again ये farmer के भी they will have 2 children, the land will be further divided. And they may be growing different things. कोई राइस ग्रो कर रहा है, कोई वीट, कोई ज्वार, कोई रागी. So the productivity of the land has fallen, बहुत ज्यादा गिर चुकी है, right? So one reason why agricultural sector is not performing well, that is also due to small land holdings with time जो आए हैं, ठीक है. Okay, next question बेटा. Which state in India has highest percentage of workforce engaged in agricultural sector? कौन से स्टेट में हाईएस्ट लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम कर रहे हैं? महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, केरला. बट दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर sector. You have to arrange them in chronological order from highest to lowest in agricultural sector. तो ये क्वेश्चन भी एक आ सकता है, ठीक है. Try to answer this बेटा. Okay, so we have very mixed response. So correct answer is C, ठीक है. Uttar Pradesh has highest rural population and significant proportion of workforce engaged in agricultural sector. फिर से एक important question है बेटा कि 2021, 22, 23 and 24 में एटलीस्ट कुछ स्टेट्स का, लाइक यूपी, लाइक बिहार, लाइक पंजाब, हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने कितना कितना एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन किया, एम्प्लॉयमेंट किया. प्लीज पिक अप दिस डेटा, दिस इज अ होमवर्क, राइट, एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन बेटा. ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Manrega, primarily aims at promoting industrial employment, providing guaranteed wage employment to rural area, encouraging private sector hiring, or boosting exports. Try to answer this question, beta. Try to answer this question. Question number 9. Absolutely, all of you are correct. Answer is B. It provides guaranteed. But a guarantee act है ना, तो guaranteed wage employment in rural areas, right? For 100 days, at least 100 days. This is very important. At least 100 days.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर, तो इट कैन बी आस्क्ड इन टू वेज, दैट विच ईयर इट केम इन. ठीक है, कौन से साल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, एंड वॉज इट एवर री, क्या इसको हमने दोबारा कभी लेके आए या नहीं लेके आए, राइट. सो यू हैव टू गो अहेड एंड रीड एवरीथिंग अबाउट मनरेगा. ये बहुत ही बेसिक आपका एक्ट है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. सो as all of you are correctly saying it, absolutely it was launched in 2005. ठीक है, एंड इसका फोकस क्या क्या था बेटा? फर्स्ट, राइट टू वर्क. एवरीबडी विल बी गिवन गारंटीड जॉब. सबका अधिकार है, एवरीवन हैज अ राइट टू गेट जॉब. ठीक है. सेकंड, डिसाइडिंग ऑन मिनिमम वेज. थर्ड बेटा, इट ऑल्सो हैड सम इंक्लूसिविटी. इंक्लूसिविटी माने क्या? इट फोकस्ड ऑन द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, माने विमेन, SC, ST, दैट वाज आल्सो देयर. ठीक है. फोर्थ बेटा, एम्प्लॉयमेंट विद इन 5 किलोमीटर्स. विद इन 5 किलोमीटर्स आपको जॉब मिलेगा, राइट. एंड इफ इट इज बियॉन्ड 5 किलोमीटर, आपको एक्स्ट्रा वेज मिलेगा. टाइमली पेमेंट ऑफ वेज, राइट. ट्रांसपेरेंसी, माने आधार कार्ड के साथ लिंक्ड होगा, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनरेगा. ठीक है. क्यों किया हमने मनरेगा? व्हाई वाज मनरेगा इंट्रोड्यूस्ड? एम वाज टू रिड्यूस पॉवर्टी, ताकि लोगों को नौकरी मिल पाए, गरीबी कम हो पाए, टू रिमूव पॉवर्टी, टू इम्प्रूव विमेन एम्पावरमेंट, विमेन को और एम्पावर करने के लिए, राइट. टू गो अहेड एंड डू रूरल डेवलपमेंट. ठीक है. टू डू क्राइसिस सपोर्ट, कि ठीक है, ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, जैसे कोई ड्रॉट आ गया, कोई पैंडेमिक आ गया, लोगों की नौकरी चली गई, तो मनरेगा विल बी अ गुड थिंग टू गो अहेड एंड एडॉप्ट. ठीक है. सो दिस इज अबाउट मनरेगा. जब भी हम मनरेगा पढ़ते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि मनरेगा क्या है, राइट. एंड बेटा, एवरी ईयर, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि 2024-25 में व्हाट इज द बजट, what is the amount allotted for मनरेगा, कितना पैसा हमने मनरेगा को अलॉट किया है? सो यू हैव टू रिमेंबर दैट. ठीक है. इट इज अप्रोक्सीमेटली 85,000 CR. So how much money has been allotted to मनरेगा? That kind of question can also be asked in exam. ठीक है. You have to also remember that. Okay. Question number 10 beta. Try to answer it. I'm starting the poll now. What is disguised unemployment commonly seen in India's agricultural sector? Unemployment due to lack of job, worker employed but not contributing, high salary in service sector, seasonal migration for jobs. Question number 10. Try to answer this question. वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर बेटा. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब लोग अनएम्प्लॉयड ही हैं, और बट हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो अपने आप को एम्प्लॉयड दिखा रहे हैं. सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिकॉज वी आर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, हमें उसका इकोनॉमिक्स इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए. सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हैज दोज लेबर्स वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज लेस देन इक्वल टू जीरो. तो वो लेबर जिनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या जीरो हो या नेगेटिव हो, राइट, दैट मीन्स दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द आउटपुट, वो कुछ भी आउटपुट को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, दैट विल बी बेसिकली योर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. So the correct answer to this question will be B, that disguised unemployment occurs when workers are engaged, more workers are engaged than needed. So there is a land
इसमें मुझे सिर्फ 2 वर्कर्स का जरूरत है, बट आई हैव एम्प्लॉयड 3 वर्कर्स, सो द 1 एक्स्ट्रा वर्कर दैट आई हैव, वो हो गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। अगर इस वर्कर को हम यहां से निकाल भी देंगे, then also my productivity, my output will not be changed. ठीक है? So in agriculture, this means extra worker could leave the farm without reducing the output. ठीक है? Okay, beta. So we will go ahead and we will stop here for today. ठीक है? This was just one of the sessions on macro trends. We will keep more such sessions based on macro trends in the future. ठीक है? Thank you, beta.